Hello everyone, good morning. Good morning everyone. Let's begin our session. So this is your 12th class and we are discussing your president. Okay. So so everything fine? Audio video everything fine? Can we start our session? Yeah, hello everyone. Okay. So welcome everyone. So let's discuss your today's topic, that is your president. Okay. So president विषय आज मैं discussion करिवा. सो आम टोटाल आप पॉलिटी आप जीएस सब बड़े डिस्कशन करी आसुचे. सो आम बहुत गुड टॉपिक्स आप कवर अप कर फ्रॉम योर ओपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू. सो लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन टुडे ऑन योर प्रेसिडेंट. So one important announcement that I would like to highlight for you, that we are always continuing, okay, your classes for your OMC and ASO at your 10 a.m. So you can come and you can attend this course. Definitely it will be helpful for your exams. Fine. And this is your subscription fees. If you want to join your Unacademy, then you can use this promo code, referral code Purusottam Live, and you can be a part of Unacademy family, where you will get your all the materials. The top educators are guiding you in the best possible way. Okay, and definitely it is going to be helpful for you guys. If 12 month subscription नौचंदी मासको मात्र आपन 500 टका पाखा पड़िबो, and if 24 month नौचंदी मासको 300 टका पाखा पड़िबो. So you can come and you can join this course and you can take its advantage. Let's start our session. That is your president. Let's start our session. That is on our president. So article 52 to 62, article 52 to 62, it talks about your, so article 52 to 62 that talks about your, that mainly deals about your with your president, right? So that you, that is the thing that you know समस्त अपन जानि चंदी. एवं अपन को क्वेश्चंस मध्ये अपन को पचारे. ओके, सो एग्जाम रे अपन क्वेश्चंस भी अपन को देखियो मिलिबो. ओके, so first of all, India's president is the head of the Indian state, who is considered as a first citizen of India, right? And he is the supreme commander of the Indian armed force. Indian armed force रो से होचंदी अपन को supreme commander president. So that's why president is always a important role अपन प्ले करती. ओके, सो जदि अपन हमर हेड तंको अपन को जाय, सो प्रेसिडेंट होचंदी अपन ही इज कंसीडर्ड एज द हेड ऑफ द स्टेट. ओके, प्रेसिडेंट होचंदी अपन हेड ऑफ द स्टेट, एंड ही इज कॉल्ड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया. ही इज ए पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव. ओके, आमे ऑलरेडी अपन को कहिछि, मु ऑलरेडी आगुरु भी. सो प्रोविजन ऑफ व्हिच आर डील विथ आर्टिकल 52 टू 78, इंक्लूडिंग आर्टिकल्स रिलेटेड टू आर्टिकल 52 टू 72. तो 52 टू 78 मेनली डील्स अबाउट योर यूनियन एग्जीक्यूटिव, जोथि कि 52 टू 62 सब तक पावर्स अपन जहा प्रेसिडेंट अपन एंजॉय करबे, दैट हैज बीन मेंशन. फाइन. So article 52 जदि अपन जानि थिबे, which talks about mainly आपनकर that there shall be a president. article 52 says that there shall be a president. So mandatory आपनकर सब बेले जे ऑफिस रे जो प्रेसिडेंट रो पोस्ट केबे वैकेंट अपन छडा जेने अपन जानि थिबे, बिकॉज़ यूज आपनकर देशर सबटु सर्वोच्च स्थान, राइट? सो दैट इज द मैंडेटरी ऑफिस, एंड ऑलवेज इट सेज दैट ऑलवेज देयर शुड बी ए प्रेसिडेंट. ओके, सब बेले गोटे आपनकर एक्टिव प्रेसिडेंट आपनकर रहितिबा दरकार. ओके, देन आपन देखंतु गोटे गोटे जदि हम देखियो, वंस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड ही होल्ड्स ऑफिस फॉर जनरली, जदि हम टर्म कथा कहबा ताले आपन 5 वर्ष पे आपन रहंती, राइट? ही सीट्स इन द ऑफिस इवन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 5 इयर्स, गिवन नो न्यू इलेक्शंस हैव बीन टेक प्लेस और नो न्यू प्रेसिडेंट हैज बीन इलेक्टेड टिल देन. तो मेनली अपन कोन हुए ता पूर्व ही अपन प्रेसिडेंट चूज हे जानते. ओके, सो ही कैन आल्सो बी री इलेक्टेड एंड देयर इज नो कैप ऑन हिज री इलेक्शन. मेनली कोन हुए 5 इयर्स पूर्व ही अपन प्रेसिडेंट सिलेक्शन हे जानते. ओके,
बट आपणकर जेपर्यंत से प्रेसिडेंट रो पोस्ट जेपर्यंत से प्रेसिडेंट रो पोस्ट रे आपणकर केही भी आसी नांती जो एक्जिस्टिंग प्रेसिडेंट जे थिबे से गद्दी के आपणकर छाड़िबे नाही बुझी परछंती सो से आपणकर जेपर्यंत नुवा इलेक्शन नुवा प्रेसिडेंट आपन न आसुंदी ओल्ड प्रेसिडेंट विल कीप दैट पोजीशन ओके सो ता पाखरे से आपणकर से पोजीशन से माने प्रेसिडेंट रो चौकी के बेले वैकेंट रहबनी या आपन माने जानि रखंतु एवं री इलेक्शन रो कोनसी प्रोविजन आपणकर अछि ना नाही तो आपणकर यस ही कैन बी आल्सो बी री इलेक्टेड सी री इलेक्टेड मध्ये आपन हेई परंती एटा यूपीएससी रे थरे क्वेश्चंस पचातला जे whether president can be re-elected or not yes there is no cap on his re-election सेमिति किछ आपनकर लिमिट हमें रखिने ओके सो there is no restrictions on your re-elections ओके सो मन रखि जानतो 5 इयर होचे आपनकर जनरल टर्म एवं केबे भी प्रेसिडेंट रो पोस्ट आपनकर वैकेंट आपन मिलिबोनी बुझी परछन तो सो एटा आपनकर मन रखि देबे नेक्स्ट देखो आपनकर आर्टिकल कथा आपन देखिबा म कहउतले आपनकर आर्टिकल 52 it talks about that there shall be a president article 53 which talks about that all the executive power of the union shall be vested in the president and shall be exercised by him either directly or through officers subordinated to him in accordance with the constitution okay सो आपनकर आर्टिकल 53 आपन कोन कहूची सो सब तक एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इट शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट ऊपर आपन प्रेसिडेंट रो बहुत पावर्स अछि हमें तको पढिबा आगु को सो बहुत प्रेसिडेंट होची बहुत बड़ चैप्टर कंप्लीट करिया इजी नुहे सो लेजिस्लेटिव पावर रहिची एग्जीक्यूटिव पावर रहिची जुडिशियल पावर रहिची मिलिटरी पावर रहिची इमरजेंसी पावर रहिची बहुत एग्जीक्यूटिव पावर आपनकर होची एवं प्रेसिडेंट को भी आपनकर माने तको काउंटर करन जे प्रेसिडेंट एक्ट्स एज ए रबर स्टैम्प बट अगेन हमें तको जेहेतु आपनकर प्रेसिडेंट होची गोटे आपनकर हमें गोटे सैक्रेड पोस्ट ओकर ओके सो हमर जेहेतु देशर गोटे सर्वोच्च स्थान देशर सर्वोच्च एनी नंबर ऑफ टर्म्स यस एक्जेक्टली हाय शुभम सत्य नारायण देन एके सत्य सागर okay good morning everyone those who are joining good morning everyone those who are watching so yes for any number terms for 5 years usually for 5 years appointment होइतंदी thank you everyone for your prompt response so rubber आपण हमें क्वेश्चंस आपण पाइबे जे whether president can be called as your rubber stamp okay so आपण कंक्लूजन लिखे पड़े we cannot say because देखो गोटे बहुत गोटे बड़ सर्वोच्च स्थान ओके एमते हमें कहि परिबन जे हां पीएम हमें मानु जे पीएम इज एक्चुअली द हेड ऑफ द गवर्नमेंट पीएम को हमें मानु जे बिकॉज़ ही इज पीएम इज कंसीडर्ड एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट बा रियल एग्जीक्यूटिव तंका हाथ रे अपन थाई बुझि परछनी पीएम इज कंसीडर्ड एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट बा आपनकर ही इज द रियल एग्जीक्यूटिव हेड हमें ताको आपनकर कहू बट ये होचंदी आपनकर रियल एग्जीक्यूटिव हेड बट प्रेसिडेंट होचंदी ही इज योर नॉमिनल हेड राइट सो ही इज योर नॉमिनल हेड बुझि परछन ना प्रेसिडेंट इज योर नॉमिनल हेड सो ऑल द वर्क बा जहां भी अपन गवर्नमेंट अपन जहां भी काम करिवो ओके गवर्नमेंट माने सरकार ओके सरकार ये प्राइम मिनिस्टर एथि पे के अपन पावरफुल बिकॉज़ ही इज योर लोक माने पीपल मुकर द्वारा से अपन इलेक्ट अपन हेइथंती राइट सेति पे के अपन पावरफुल सो मेजॉरिटी तंकर जे लीडर्स अपन थिबो से हबे अपन जे अपन मेजॉरिटी पार्टी रो जे अपन लीडर थिबो से अपन पीएम ओके सो ता भितर अपन जेबनी बट वेदर इट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ही इज इलेक्टेड बाय द पीपल लोक मानकर डायरेक्टली मेजॉरिटी पावर अपन एन्जॉय करछन प्राइम मिनिस्टर सेति प्राइम मिनिस्टर इज एक्चुअली वेरी वेरी इंपोर्टेंट फाइन ना सेति पे तंका में कोच अपन ही इज द रियल एग्जीक्यूटिव हेड राइट ही इज कॉल्ड एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट बट प्रेसिडेंट ये सब जो गवर्नमेंट अपन काम करिवो ए गवर्नमेंट अपन जहां भी अपन एक्शन हबो ऑल द वर्क एंड एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट जहां भी अपन काम बा जहां भी गवर्नमेंट अपन एक्शन हबो इट विल बी फॉर्मली डन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट बुझी परछंदी सेति पे कि प्रेसिडेंट को हमें अपन कोन कहू दैट्स व्हाई प्रेसिडेंट इज कॉल्ड एज अ नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट को सेति पे कि नॉमिनल हेड अपन को जाय आर पीपल गेटिंग समझ जानि परछंदी ठीक अछि सो all the actions of government mo go through all the actions say dekho all the actions of government is formally done in the name of the president so that's why he is called as your nominal head okay so president hochun ame jodi apan kahiba so president hochun president ko apan ko jaye formal executive head ko jaye president is also called as your head of the state president ko nominal head madhya apan ko jaye president ko ceremonial head madhya apan ko jaye president is also called as your first citizen of india ebong jetto jago सब apan armed force roichi tara supreme commander kiye he is also your president फाइन सो ये होची आपनकर प्रेसिडेंट होचंदी आपनकर सुप्रीम कमांडर ऑफ योर आर्म फोर्स ठीक अछि तो सेति पे के तांका पाखरे मिलिटरी पावर मते आपनकर से एन्जॉय करंती तो प्राइम मिनिस्टर आपन पावरफुल आपनकर होंती किंतु आपनकर प्रेसिडेंट आपनकर जदी सर्व आपन कहती सबुठार आपनकर हेड जदी ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट आपन देखिबे तले ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट रे सबुठु रैंक 1 आपन किया से सर प्रेसिडेंट तो प्राइम मिनिस्टर आपन पावरफुल बट तांकर ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट आपन रैंक 3 फाइन बुझी परछन तो सो प्रेसिडेंट होचंदी आज ही इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ओके सो टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन योर
प्राइम मिनिस्टर एंड योर प्रेसिडेंट सेति पे कि तांको आपनकर लेस पावर हमें दे जिसु जदि प्रेसिडेंट को भी हमें डायरेक्टली इलेक्ट करथंतो एवं प्राइम मिनिस्टर को भी डायरेक्टली इलेक्ट करथंतो तो इनको भीतर कोन हितंदा सर गोटे कॉन्फ्लिक्ट अपन हितंदा देश आपनकर ठीक से अपन चली नथंदा प्रेसिडेंट गोटे अपन जिद्दी करथंदा प्राइम मिनिस्टर गोटे जिद्दी करथंदा तो कॉन्फ्लिक्ट अराइज हितंदा सो टू अवॉइड दिस कॉन्फ्लिक्ट ओके सो टू अवॉइड दिस कॉन्फ्लिक्ट प्रेसिडेंट को आपनकर प्रेसिडेंट ही इज एक्चुअली प्रेसिडेंट को हमें आपनकर गोटे ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंसी ताको सर्वोच्च स्थान दोचे ताको गोटे सैक्रेड पोस्ट अपन दोचे बुझि परछंती सो प्रेसिडेंट पोस्ट भी आपनकर केमिति आपन माने तंकर इलेक्शन हुए आपन मन सब जानि छथि सो दैट इज रिलेटेड विथ आर्टिकल 54 प्रेसिडेंट को हम केमिति आपन इलेक्ट करू छे राइट सो प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन एक्ट 1952 अनुसार इट लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अकम्पनीड बाय योर प्रेसिडेंशियल एंड योर वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शंस रूल 1974 तो ये माने आपनकर ये सब मेंशन आपनकर रही छि जोथि के आपनकर प्रेसिडेंट आपन इलेक्शन करा जाय सो मेनली दैट इज योर आर्टिकल 54 ओके सो मन रखिथंदु दैट डील्स विथ योर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ योर इंडिया तक आपन कहि परिबे एवं जदि आपन देखिबा आपनकर माने प्रेसिडेंट रो केमिति आपन माने की आपन प्रेसिडेंट हे परिबे ओके जो इलेक्टोरल कॉलेज आपन थाए ओके सेगुडी को सब आपनकर ये सब प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शंस आपन जो रही 1952 हला 1974 आपन हला एथरे सब आपनकर उल्लेख आपनकर करा जैछि बा सब आपन मेंशन आपन होइछि आर्टिकल 55 टॉक्स अबाउट योर मैनर ऑफ इलेक्शन केमिति आपन इलेक्शन आपन करा जे ओके सो द प्रोसेस इलेक्शन प्रोसेस आपनकर ताको आपनकर डिस्क्राइब करा जैछि देन आपनकर हमें आपनकर आउ किछि मो आपनकर क्वालिफिकेशन सेठी आपन कहि रखे प्रेसिडेंट कर कोन क्वालिफिकेशन की आपनकर प्रेसिडेंट हे परिबो so कहि परिबे who will be your concerned by the president because all the exercise is exactly came so nominal head fine because all the powers exercised by the pm ठीक अछि concerned by the president veto power okay fine yes ठीक अछि सो प्रेसिडेंट कर बहुत पावर अपन रही छि हमें ताको सब जिंस ताको डिटेल में डिस्कशन करबा ओके एकेम सो क्वालिफिकेशन जे हमें कहबा सो फर्स्ट क्वालिफिकेशन कोन होबा दरकार फर्स्ट क्वालिफिकेशन जे अपन से आगो इंडिया रो सिटीजन त निहा देबर अपन होबा दरकार ठीक ना भाई तापर तते हम एज कथा अपन कहबा एज अपन केते होबा दरकार एटा प्रीलिम्स रे ओपीएससी रे क्वेश्चंस आंसर छि एज शुड बी मोर देन 35 इयर्स राइट सो 35 इयर्स अपन एज अपन हेतिबा दरकार ओके एवं से अपन गोटे लोकसभा मेंबर को जहां अपन दरकार तार को क्वालिफाई करूथबा दरकार माने पर्सन जे प्रेसिडेंट इलेक्शन अपन जे लड़िबो सो दैट पर्सन मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज ए लोकसभा मेंबर माने लोकसभा मेंबर हेतिबो बोली म कहूनी लोकसभा मेंबर को जहां जहां क्राइटेरिया दरकार सो से सब रिक्वायरमेंट से सब क्वालिफिकेशन ये मध्य फुलफिल हो करूथबा दरकार के आपनकर प्रेसिडेंट बुझि परछंती एवं कोनोसी भी आपनकर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मध्य आपनकर से होल्ड न करथिबा दरकार ठीक अछि ये होची मिनिमम क्वालिफिकेशन जा हेले हमें कहि परबा जे से आपनकर प्रेसिडेंट आपनकर इलेक्शंस लड़ी परिबो ठीक अछि जेमते आउरी बहुत डिटेल अछि त आपनकर परे पढिबे सो सिक्योरिटी डिपॉजिट 15000 रुपीस आपनकर रही जदी आपनकर से 1/6 आपनकर जदी पोल वोट जदी से 1/6 ऑफ पोल वोट जदी से सिक्योर करि परनांती ताले से ताको आपनकर से जो पैसा आपनकर कंप्लीटली रिजेक्ट हिजो ताको आपनकर रिफंड आपनकर हबनी जदी इफ ही विल एबल टू सिक्योर मोर देन 1/6 ऑफ द पोल वोट देन ओनली दैट मनी विल बी रिफंडेबल आपनकर 15000 गोटे फीस गोटे आपनकर डिपॉजिट आपन कर जाय ठीक अछि तो टू बी वेरी टेक्निकल आपनकर बहुत जिंस आपन रही छि ओके सो देखिबा आपनकर दोज हु वांट टू जॉइन योर अनअकैडमी जदी आपन जॉइन करै चाहते यू कैन यूज दिस रेफरल कोड एंड यू कैन कम योर अनअकैडमी रा बहुत अनअकैडमी छोटे बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म आपन समझ जानिथिबे सो यू कैन यूज दिस रेफरल कोड एंड यू कैन जॉइन योर अनअकैडमी ओके सो पुरुषोत्तम लाइव इज माय डिस्काउंट कोड सो आपनकर जदी रेफरल कोड यूज करछन सो यू विल गेट योर डिस्काउंट एंड यू कैन जॉइन अनअकैडमी एवं आपन प्रिपरेशन को स्मूथ करि परिबे एवं सुंदर मते आपन करि परिबे बहुत ऑल द टॉप एजुकेटर्स ऑफ ओडिशा टेकिंग योर क्लासेस ऑन अ डेली बेसिस ओके जदी म अनअकैडमी विषय आपन टिके कहिबी 2 मिनिट में आपन सारी अनअकैडमी रा सब्सक्रिप्शन जदी आपन जानि नांती अनअकैडमी कोन अनअकैडमी होची आपन ओपीएससी रा अनअकैडमी होची आपन इंडिया रा सबटो लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म एवं आपन ओडिसा रे सबटो आपन बडो प्लेटफॉर्म आपन अनअकैडमी ओके सो ऑनलाइन एजुकेशन रे सो आपन मानकर ओपीएससी हला ओएसएससी हला एवं ओट्रिपलएससी हला ई सब एग्जाम्स आपन घरे बसी के आपन प्रिपरेशन करि परिबे दीज आर द टॉप एजुकेटर्स हु आर टेकिंग योर क्लासेस लक्ष्मीधर सर दीपक सर देन विभूति सर रोजालिन मैम योर अमीय सर ललित सर स्निग्धाश्री मैम रजत सर वैष्णव सर उपेंद्र सर गुणानिधि सर मनमत sir, Sohag sir, Janaki sir and Jitendra sir. These are the top educators who are taking your classes on a regular basis. So आपन more than 40-50 hours on live होसंदी. So you can take their advantage and you can smooth your preparation. History, economics, then आपन current affairs, then syllabus preparation, environment, ecology, science and technology, language paper, geography. Then आपन state specific topics, then after reasoning, aptitude, language, सब आपन cover up होची. So you will get everything. OS पे जदी म आपन कहबी prelims पे, mains पे एवं optional पे, geography, history, home science, sociology सब आपन रहउची. तो आपन स्टार्ट हे जाउची. सो आपन आसी के जॉइन कर परबे prelims, mains एवं optional पे एवं एथिर आपन एसओ एग्जाम आपन हाई कोर्ट रो एग्जाम एथिर भी आपन सब रहउची. सीटी बीडी ओटीटी ओएसएसटी ओएपीएस ओएसएससी जूनियर ये सब आपन रहउची. आपन कोन फीचर्स रहउची लाइव क्लास आपन रहउची वीकली क्विज रहउची टेस्ट सीरीज आपन रहउची प्लस डाउट क्लियरिंग सेशन आपन रहउची प्लस आपन
जो माने निज निजर आपनकर एजुकेटर्स आपन बाची कि आपन माने क्लास आपन करि परिबे ओके एंड दिस इज योर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन फीस ओके अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन फीस जेरे कि आपन को व्हेन यू विल अप्लाई योर प्रोमो कोड ओके पुरुषोत्तम लाइव आपन अप्लाई कर परिबे एंड यू विल गेट योर 10% डिस्काउंट एंड यू कैन बी ए पार्ट ऑफ योर अनअकैडमी एवं आपन प्रिपरेशन आपन स्टार्ट कर परिबे ठीक अछि सो जेबं जदि क्लास लाइव क्लास आपन मिस करछन्ती देन यू कैन आल्सो गो फॉर योर recorded session में आपन देखि परिबे फाइन let's come back to our discussion. So we will see your executive power of the president आपन कोन executive power आपन कोन एन्जॉय करंती तो ऑलरेडी आपन 9:50 आपन हेसलानी मोर 10 o'clock रे आउ 10 मिनिट रे मोर कोन एगेन क्लास अछि सो हमें धीरे धीरे आपन शीघ्र शीघ्र म आपन कहि देबी सो कोन कोन आपन पावर्स आपन खाली बिकॉज़ आपन मेंस आपन कोन करियर अछि ना आपन गोटे भलो इंट्रोडक्शन दबार अछि प्रेसिडेंट रो आपन रिलेटेड आर्टिकल विषय आपन टिके लिखिबे प्रेसिडेंट रो क्वालिफिकेशन आपन लिखिबे ओके देन होछि आपनकर प्रेसिडेंट रो पावर्स आपन लिखिबे तापर आपन गोटे भलो कंक्लूजन देबे जे why your president cannot be considered as a rubber stamp okay so मोहरा गवर्नमेंट रो मोहरा हम ताको कोन पे आपन कहि परिबा नाही okay for every executive action that the Indian government takes is to be taken in his name he may or may not make rules to simplify the transaction of business at the central government he appoints your attorney general of India and determines his remuneration and he appoints your CAG आपन को अपॉइंटमेंट करिवो CEC देन आपन अदर इलेक्शन कमिश्नर चेयरमैन एंड UPSC को आपन को अपॉइंटमेंट करिवो देन आपन गवर्नर को अपॉइंटमेंट करा जाय देन फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया देन चेयरमैन ताको मध्ये आपन अपॉइंटमेंट करा जाय इफ वी विल टॉक अबाउट योर जुडिशियल पावर्स जदि हम जुडिशियल पावर को आपन डिस्कशन कमे करिवा ओके सो देन अपॉइंटमेंट ऑफ योर चीफ जस्टिस एंड सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेस आर ऑन हिम okay then he takes advices from supreme court however those advices are not binding on him आपनकर he takes advices from supreme court however those advices are not binding on him so आई जो जेतबे आपन आर्टिकल 143 आपन जानिथिबे सो एडवाइजरी जुरिसडिक्शन आपन रहिছে एको सब हमें क्लियर कट आपन डिस्कशन करिया आपन क्लास रे ओके सो वर्तमान खाली आपन जानि थांतु जे कोन कोन जुडिशियल पावर आपन रहिছে he has a pardoning power मध्ये आपन रहिছে under article 72 he has conferred with the power to grant pardon against a punishment for an offense against union law punishment by martial court or your death sentence ठीक अछि तो आपन पार्डनिंग पर डेथ सेंटेंस को मध्ये आपन माफ कर देई पारंती पार्डनिंग पावर पर सेपरेट आपन चैप्टर आपन रहबे एवं क्वेश्चंस आपन ओपीएस रे पार्डनिंग पावर ऊपर क्वेश्चंस आपन पचारि सारछि ऑलरेडी ओके सो ताको आपन भलो से देखिबे ओके लेट्स गो टू योर नेक्स्ट पॉइंट दैट इज योर डिप्लोमेटिक पावर मध्ये आपन एन्जॉय करंती प्रेसिडेंट इंटरनेशनल टीटी एग्रीमेंट जहां भी आपन देश रे आपन साइन हो दैट विल बी टेकन अंडर द प्रेसिडेंट्स नेम राइट प्रेसिडेंट्स का नेम अनुसार आपन निया जाय ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर इंडिया इन योर इंटरनेशनल फोरम्स एंड अफेयर्स मिलिटरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ही इज द कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स ऑफ योर इंडिया ही अपॉइंट्स योर चीफ ऑफ आर्मी के अपन अपॉइंटमेंट करंती नाभी के अपन अपॉइंटमेंट करंती एयर फोर्स रो चीफ को मध्ये अपन अपॉइंटमेंट करंती ठीक अछि सब तंगा अंडर अपन थाए एवं प्रेसिडेंट अपन जेतबे अपन ऑर्डर देबे सेतबे अपन इमरजेंसी मध्ये अपन लागि पारे सो नेशनल इमरजेंसी स्टेट इमरजेंसी बा प्रेसिडेंट्स रूल हमें तको कुआ जाय स्टेट इमरजेंसी को जानि तको प्रेसिडेंट्स रूल ऑन योर स्टेट तको कुआ जाय एंड आर्टिकल 360 दैट टॉक्स अबाउट योर फाइनेंशियल इमरजेंसी ओके सो द फाइनेंशियल इमरजेंसी दैट टॉक्स अबाउट योर आर्टिकल 360 अपन मन रखिबे एंड ऑर्डिनेंस कथा जे हमें कहबा सो ऑर्डिनेंस ऊपर ऑलरेडी ओपीएससी प्रीलिम्स अपन क्वेश्चंस आसरची ओके ओपीएससी प्रीलिम्स अपन क्वेश्चन पचार सरची जे आपनकर को आर्टिकल आपनकर दैट डील्स विथ योर प्रेसिडेंट ओके सो दैट इज योर आर्टिकल 123 आउट भी क्वेश्चंस पछातला जे मो तक मध्ये आपन कहया चाहिबे ओटा क्वेश्चन आपन आसीतला जे जो प्रेसिडेंट आपन ओथ नियंती सो ओथ आपन नियंती जानि जन समझ जे प्रेसिडेंट करो जो रिमूवल आपन हुए तो प्रेसिडेंट को जो रिमूवल आपन हुए तो सी आपनकर तक में कोन को तको इंपीचमेंट प्रोसीजर आपन को ठीक अछि एवं प्रेसिडेंट को जो ओथ नियंती दैट इज रिलेटेड विथ व्हिच आर्टिकल सो आर्टिकल 60 एटा मध्ये आपन कोटे क्वेश्चन आस्तला जदि आपन जानि थिबे प्रेसिडेंट आपन जेतले ओथ नेबे कहा अगेंस्ट आपन नेबे कहा माने की आपन देबे दैट इज योर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये मते कोटे क्वेश्चन आस्तला जदि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपन एब्सेंट थिबे ताले आपन कोन हबो जदि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपन एब्सेंट थिबे ताले की आपन को देबे सो इफ ही इज एब्सेंट ताले आपन सीनियर मोस्ट कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जे जज थिबे सो आपन सी आपन तंको ओथ आपन देबे ठीक अछि एवं ये आपन एंकर ओथ आपन अलगा जो सब आपन ओथ नेबे ओके सो एंकर अलगा एंकर माने इट इज डिफरेंट ये होचंदी डायरेक्टली क्वेश्चन पचरे जे हु इज एक्चुअली द प्रोटेक्टर और योर डिफेंडर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आंसर कोन हबो प्रोटेक्टर ऑफ योर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सो दैट विल बी योर प्रेसिडेंट जदि पचरे प्रिजर्वर ऑफ योर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आंसर कोन हबो दैट विल बी प्रेसिडेंट जदि पचरे आपन को जे डिफेंडर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तले आंसर हबो आपन प्रेसिडेंट कोन पे की बिकॉज़ ओथ जो ये नियंती ये कहंती जे टू प्रोटेक्ट प्रिजर्व एंड टू डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ओके सो सी आपन टोटल कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करिवार दायित्व होची आपन प्रेसिडेंट करो ओके कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करिवार दायित्व होची आपन प्रेसिडेंट करो सेति तंग ओथ आपन अलग थाई सो ही टेक्स योर ओथ आर्टिकल 60 रे आपन मन रखितंदो आर्टिकल 60 रे ही टेक्स ओथ टू प्रोटेक्ट टू प्रिजर्व एंड टू डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन आ जदि आपन कस्टोडियन
ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पचारला ताला आंसर आपनकर हबो सुप्रीम कोर्ट सो बहुत पिलांकर आपनकर भूल हुए ओके बहुत पिलांकर आपनकर हुए बहुत पिलांकर आपनकर भूल हुए रिलेटेड टू योर अब जे माने आपनकर जो कस्टोडियन पचारछि आपनकर प्रोटेक्टर पचारछि सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड एवर सो आपनकर आंसर आपनकर हबो जदि प्रोटेक्टर पचारछि कि डिफेंडर पचारछि आंसर हबो आपनकर प्रेसिडेंट एवं जदि आपनकर पचारछि जे कस्टोडियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ताला आंसर हबो आपनकर सुप्रीम कोर्ट ओके सो दीज आर द थिंग दैट एक्चुअली मो चाहूछि आपन माने समस्त जानतु एवं हमर जेतु प्रेसिडेंट रे सर्वोच्च स्थान ओके सो प्रेसिडेंट रे सर्वोच्च स्थान सेति हमें कहि परिबन जे प्रेसिडेंट को जे आपनकर रबर स्टैंप काटे मोहर बोली हमें कहि परिबनी एमते बहुत सब सेशन आपन रहिछि तो प्रेसिडेंट रो फाइनेंशियल पावर आपन रहिछि प्रेसिडेंट रो आपनकर जो जॉइंट सिटिंग रा प्रोविजन में रही जॉइंट सिटिंग ऊपर भी ओपीएससी क्वेश्चन पचार से आर्टिकल 108 तक मन रखिथिबे ठीक अछि तो आको आको मैं आहुरी अपन कंटिन्यू करबा आहुरी अपन क्लास देखिबा सो मोर ऑलरेडी मोर पाखरे 2 मिनिट 5 मिनिट मोर पाखरे टाइम अछि सो आई नीड टू अगेन कम टू योर अनअकैडमी प्लेटफॉर्म सो अपन माने दोज हु आर इंटरेस्टेड दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एएसओ एंड ओएमसी सो यू कैन कम एंड यू कैन अटेंड माय कोर्स सो मोर वर्तमान आपनकर 5 मिनिट मोर वर्तमान क्लास स्टार्ट हो ठीक अछि सो लेट्स वाइंड अप आवर सेशन तो विश यू ऑल द बेस्ट मे गॉड ब्लेस यू ऑल जार सब सेकंड मोस्ट सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट मस्ट क्वालिफाई लोकसभा व्हाइल प्रेसिडेंट इज अ राज्यसभा मेंबर where we can get previous question okay सब आपन का जो डाउट अछि इम्पीचमेंट प्रोसीजर ये इम्पीचमेंट प्रोसीजर सब अछि क्वालिफिकेशन अछि ताको आपन नेक्स्ट क्लास में ताको कवर अप कर दो ठीक अछि गोटे स्पेशल क्लास रखि देबा हमें प्रेसिडेंट ऊपर हम आपन डिटेल कवर अप कर दे ठीक अछि राजेश मीमांसा लेट्स वाइंड अप आवर क्लास सो वी विल मीट आफ्टर योर 5 मिनट्स ओके फाइन सो थैंक यू गाइस फॉर जॉइनिंग सेशन विश यू ऑल द बेस्ट सब जो माने आपन देखुतले वीडियो को लाइक कर दियंतु ये वीडियो पावर आपन रहिछि ताको हम डिटेल डिस्कशन करी प्रेसिडेंट ऊपर खाली जस्ट गोटे आईडिया आपन देली ओके 15 20 मिनिट सेशन बहुत छोटा सेशन आपन एटा प्रेसिडेंट ऊपर हमें टोटल 2 आवर सेशन हमें नै परिबा कंटिन्यू करि परिबा ओके एवं देखिबा जे ओपीएससी आपन कोन कोन क्वेश्चन पचार ठीक अछि मु स्पेशल क्लास है तो आपन कवर करियो ओके फाइन विश यू ऑल द बेस्ट लेट्स वाइंड अप आवर सेशन थैंक यू गाइस फॉर अटेंडिंग सेशन हैव ए गुड डे